Good morning, students. Today we will start class 12 biology, first chapter, sexual reproduction in flowering plant. This chapter is very important in both state level exam as well as in NEET 2026. So, from very basic we will start and we will cover the topic according to every details present in the NCERT book. So, from this starting, first we will discuss about what is sexual reproduction. As we know earlier, reproduction is normally of two types, sexual reproduction and asexual reproduction. In sexual reproduction, we need gametes. Sexual reproduction, we need gametes. Gametes are required. Gametes are required. But in asexual reproduction, there is no requirement of gametes. In sexual reproduction, gametes are very much required. And fusion of gametes also takes place. Fusion of gametes. Requirement of gametes and fusion of gametes. Fusion of gametes और इसे हम fertilization कहते हैं. Fertilization. Fusion between different gametes are known as fertilization. So in sexual reproduction पहले क्या होता है, gamete formation होता है and after that there is fusion of gametes and the product after fertilization is known as zygote. The product after fertilization is known as zygote and this zygote further divides to form embryo. This zygote further divides to form embryo and this embryo again converted into new organism. This embryo again converted into new organisms. So the basic thing is in sexual reproduction there is formation of gametes, there is fusion of gametes. After the fusion of gametes the product is known as zygote. Then further the zygote divides to form embryo and that embryo gets converted into new organism. So in sexual reproduction, flowering plants, if we consider about the flowering plants, normally हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं. एंजियोस्पर्म नॉर्मली इन फ्लावरिंग प्लांट हम जिस प्लांट फ्लावरिंग प्लांट में हम जिसके बारे में पढ़ते हैं हम उसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं. इन एंजियोस्पर्म्स द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज फ्लावर. इन एंजियोस्पर्म द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज फ्लावर. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. Flower is the reproductive organ. Flower is the reproductive organ. In angiospermic plants, flower is the reproductive organ. Actually क्या होता है, flower is the most fascinating part. Flower is the most fascinating part. Most fascinating part of angiospermic plant is flower. Flower is the most fascinating part of the angiospermic plant. And flower is the reproductive organ. It has four different whorls. A flower has four different whorls. एक फ्लावर में क्या होता है, 4 different whorls रहता है. A flower has 4 different whorls. फर्स्ट जो पार्ट होता है फ्लावर को इसे हम कैलिक्स कहते हैं. The first whorl of the flower is calyx. Second whorl of the flower is corolla. Second whorl of the flower is corolla. Third whorl of the flower is androecium. Third whorl of the flower is androecium. And final last whorl of the flower is
gynoecium. Last whole or fourth whole of the flower is gynoecium. कैलिक्स एंड कोरोला, ये दोनों को हम क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल होल. नॉन एसेंशियल होल. कैलिक्स एंड कोरोला इज नॉन एसेंशियल होल ऑफ द फ्लावर. नॉन एसेंशियल होल. ये एक्टिवली रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, ये रिप्रोडक्शन में असिस्ट करते. ये जो दो होल होता है इसे हम एसेंशियल होल कहते हैं. एक्चुअली ये दोनों होल क्या करते हैं? गैमेट प्रोडक्शन करते हैं. इससे हम क्या कहते हैं? एसेंशियल होल्स ऑफ द फ्लावर. सो फ्लावर इज द चीफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर, most fascinating part of the angiospermic plant is flower, and flower has 4 different holes: calyx, corolla, androecium and gynoecium. तो फ्लावर फास्ट डेवलप जहाँ से होता है इसे हम फ्लोरल प्राइमोडियम कहते हैं. फ्लोरल प्राइमोडियम. फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम फ्लोरल प्राइमोडियम. फ्लोरल प्राइमोडियम से फ्लावर डेवलप्स होता है. एक्चुअली क्या होता है? सपोज दिस इज द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. इसमें जो बॉड रहता है, बॉड, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ बॉड. फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव. और ये वेजिटेटिव बॉड का क्या काम है? ये वेजिटेटिव बॉड क्या करता है? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ शूट. वेजिटेटिव बॉड का काम होता है ये शूट फॉर्मेशन करता है. फॉर्मेशन ऑफ शूट, डेवलपमेंट ऑफ शूट. ये फॉर्मेशन ऑफ शूट और डेवलपमेंट ऑफ शूट करता है. सेकेंड जो बॉड होता है इसे हम फ्लोरल बॉड कहते हैं. फ्लोरल बॉड. और ये जो फ्लोरल बॉड है, ये फ्लोरल बॉड क्या करता है? इट डेवलप्स इनटू. फ्लोरल बॉड क्या करता है? इट डेवलप्स इनटू फ्लावर. इट डेवलप्स इनटू फ्लावर. ये फ्लावर को कन्वर्ट होता है, ये फ्लावर फॉर्मेशन करता है. तो जो वेजिटेटिव बॉड होता है वो क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ शूट. और जो फ्लोरल बॉड होता है वो क्या करता है? डेवलप्स इनटू फ्लावर. तो फ्लावर कहाँ से डेवलप होता है? फ्लोरल प्राइमोडियम से डेवलप होता है. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरल बॉड. और ये फ्लोरल बॉड डेवलप्स इनटू फ्लावर. तो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? हम एंजियोस्पर्म से एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. एंजियोस्पर्मिक प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा करता है? तो फ्लावर क्या होता है? मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ द प्लांट होता है. 4 डिफरेंट होल्स से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोइसियम. कैलिक्स एंड कोरोला को हम क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल होल. और इसे हम एसेसोरी होल भी बोलते हैं. एसेसोरी. इसे हम एसेसोरी होल भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज एसेसोरी होल्स. ये जो एंड्रोइसियम और गाइनोसियम होता है इसे हम क्या कहते हैं? एसेंशियल होल. ये जो फ्लावर होता है ये फ्लोरल प्राइमोडियम से डेवलप होता है. अगर हम बॉड देखेंगे तो ये जो बॉड है ये बॉड 2 टाइप का होता है. वेजिटेटिव बॉड, जो वेजिटेटिव बॉड फॉर्मेशन ऑफ शूट करता है. फ्लोरल बॉड डेवलप्स इनटू फ्लावर होता. ठीक है ना? तो फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम. फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम. फर्स्ट फ्लोरल प्राइमोडियम फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फ्लावर फॉर्मेशन होगा. तो फ्लावर फॉर्मेशन कहाँ से होता है? फ्लोरल प्राइमोडियम से फ्लावर फॉर्मेशन होता है. देखो इस तरह से क्या होता है, अभी यहाँ पे है. पहले क्या हुआ है? यहाँ पे प्राइमोडियम फॉर्मेशन हुआ है, टर्म फॉर्मेशन हुआ है. दिस इज नोन एज द फ्लोरल प्राइमोडियम. दिस इज नोन एज द फ्लोरल प्राइमोडियम. यहाँ पे क्या हुआ है? फ्लोरल प्राइमोडियम का डेवलपमेंट हुआ है. फिर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इनफ्लोरेसेंस. इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होता है. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. पहला क्या होगा? ना फ्लोरल प्राइमोडियम का फॉर्मेशन होगा.
उसके बाद क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन टेम, और हम इसे क्या बोलते हैं, फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस और फ्लावर एक्सिस, स्टेम और फ्लावर एक्सिस। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरोसेंस और बॉड फॉर्मेशन होगा, और इससे हम क्या कहते हैं, दिस इज द कंप्लीट फ्लावर, दिस इज द कंप्लीट फ्लावर। तो फर्स्ट क्या होगा, पहला क्या होगा, जो फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम, फॉर्मेशन ऑफ इनफ्लोरोसेंस बियरिंग द बॉड एंड फाइनली फ्लावरिंग। तो एक प्लांट में फ्लावर ऐसा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर हम पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट देखेंगे तो इसमें कितने पार्ट हैं, 4, 4 डिफरेंट होल्स है, 4 डिफरेंट होल्स है। फर्स्ट जो होल ऑफ द फ्लावर है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैलिक्स। फर्स्ट होल ऑफ द फ्लावर इज कैलिक्स, फर्स्ट होल ऑफ द फ्लावर इज कैलिक्स। ये वाला जो पार्ट है इसे हम कैलिक्स कहते हैं, और ये जो कैलिक्स है ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट, इट प्रोटेक्ट्स द, it protects the floral bud, it protects the floral bud, it protects the floral bud। फ्लावर जब बर्ड के कंडीशन में होता है तो ये जो कैलिक्स है इसे प्रोटेक्ट करेगा, और ये जो कैलिक्स का इंडिविजुअल पार्ट, इंडिविजुअल पार्ट ऑफ कैलिक्स, इंडिविजुअल पार्ट ऑफ कैलिक्स, कैलिक्स मेनी स्मॉलर पार्ट को लेकर, मेनी स्मॉलर पार्ट टुगेदर फॉर्म्स कैलिक्स। इंडिविजुअल पार्ट ऑफ कैलिक्स क्या होता है, इंडिविजुअल पार्ट ऑफ कैलिक्स, इंडिविजुअल पार्ट ऑफ कैलिक्स को हम क्या कहते हैं, सेपल। मेनी सेपल टुगेदर फॉर्म्स कैलिक्स, आई सेपल इज द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ कैलिक्स। और क्या होगा, देखिए ये जो सेपल है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेनी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, मेनी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर वो विदर ऑफ हो जाता है, वो गिर जाता है। लेकिन कुछ फैमिली ऑफ प्लांट्स होता है जहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ सेपल्स, उसे हम डेसिडियस सेपल्स कहते हैं और डेसिडियस कैलिक्स कहते हैं, डेसिडियस सेपल। डेसिडियस सेपल क्या होता है, डेसिडियस सेपल जो गिर गया, डेसिडियस सेपल है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन विदर ऑफ हो जाता है। डेसिडियस सेपल क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो विदर ऑफ हो जाता है, ये है डेसिडियस सेपल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विदर्स ऑफ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ फैमिली जब प्लांट्स ऐसा होता है जहाँ पे सेपल रहता है, इसे हम परसिस्टेंट सेपल कहते हैं, परसिस्टेंट सेपल। परसिस्टेंट सेपल क्या होता है, इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेपल। फैमिली सोलानासी, इन सोलानासी फैमिली, इन सोलानासी फैमिली there is a persistent sepal। ब्रिंजाल सोलानासी फैमिली एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, ब्रिंजाल, एंड ऑल्सो विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ टोमेटो, एंड विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ चिली। These all belongs to family Solanaceae, and in this family even after fertilization there is presence of sepals, and such type of sepals are known as persistent sepal. And calyx is the first whorl of the flower. It is the first whorl. Calyx is the first whorl of the flower. First whorl of the flower is calyx. Second whorl of the flower is corolla, and corolla is the second whorl of the flower. Corolla is the second whorl of the flower, and corolla is generally colored.
Corolla is generally colored. Corolla have different colors. Corolla is generally colored, but sepal is generally green in color. Sepal is generally green in color. Sepal is generally green in color. But corolla has different colors. So it is the second whole of the flower and generally colored. Individual part of the corolla is petal. Individual part of the corolla. Individual part. Individual part of corolla. Individual part of corolla is petal. A petal, the main function of the petal is, it attracts. The main function of the petal is it attracts the pollinating agent. It attracts the pollinating agent. The main function of the petal is it attracts the pollinating agents and carried out pollination. Carried out pollination. Main function of the petal is, as it is colored, it attracts the pollinating agent and carried out pollination. Third whorl of the flower is known as androecium. Androecium is the third whorl of the flower. Androecium is the third whorl of the flower. Gynoecium is the fourth whorl of the flower. Gynoecium is the fourth whorl of the flower. So in an angiospermic plant, the main reproductive organ is flower, and a typical flower has 4 different whorls. Calyx is the first whorl of the flower. It protects the floral bud. After fertilization, in most of the flowers, most of the plants, calyx withers, and such type of calyx is known as deciduous calyx. In some families, like Solanaceae family, even after fertilization, there is calyx remains attached with the fruit or with the vegetable. Such calyx is known as persistent calyx. It is found mainly in the family of Solanaceae, brinjal, tomato, chili, etc. Second whole of the flower is corolla. Individual part of the corolla is known as petal, and petal is generally colored. As it is colored, it attracts the pollinating agent and carried out pollination. Androecium is the third whorl of the flower, and gynoecium is the fourth whorl of the flower. So a typical flower has 4 different whorls. Third whorl of the flower is known as androecium. Androecium is the third whorl of the flower, and androecium is known as the male reproductive organ. Androecium is known as the male reproductive organ. Androecium is known as the male reproductive organ. The male reproductive organ is the androecium. And androecium also have many individual parts. And individual part of androecium is known as stamen. Stamen is the individual part of androecium. Stamen is the individual part of androecium. And each stamen has 3 components. Each stamen has 3 components. Each stamen has 3 components. Androecium is the third whorl of the flower. Androecium is the third whorl of the flower, and it is the male reproductive organ.
individual part of the androecium is stamen. Individual part of the androecium is stamen, and each stamen has three components. Each stamen has three components. Androecium मेल लिपोप्रोटीन का काम क्या होता है? Like it helps in formation of male gamete. It helps in formation of male gamete. ये क्या करता है? मेल गैमेट फॉर्मेशन करता है. It helps in formation of male gamete. It helps in formation of male gamete. ये मेल गैमेट फॉर्मेशन करता है. तो मेल important function of this stamen is formation of male gamete. अगर हम एक stamen देखेंगे, in most of the angiospermic plant, each stamen has three structural components. The first one is the anther, and there is a stalk known as filament. Both the anther and the filament joined with each other with the help of connective. So this is the anther. The first part of the angiospermic stamen is the anther. This part is known as filament. Either the anther or the filament joined with each other through connective. So a stamen has three structural components: anther, connective, and filament. In most of the stamen, anther has two lobes, hence it is bilobe. तो हम इसे क्या कहते हैं? Bilobed anther. Inside the anther, this free space is known as pollen sac. This free space is known as pollen sac. और इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो पोलन सैक और माइक्रो स्पोरेंजियम. पोलन सैक और माइक्रो स्पोरेंजियम. Inside the microsporangium, there will be very minute dust-like substances, dust-like light substances. Such substances is known as pollen grain. Such substances is known as pollen grain, and pollen grain is the male gametophyte. And this end of the filament, this is the proximal end of the filament. The proximal end of the filament attached with the thalamus or the petal. Actually क्या होता है? So this is the stalk of the flower. A flower has a stalk, or this is the pedicel of the flower. At the tip of the stalk there will be a swollen part. Such swollen part is known as thalamus. And this thalamus has nodes because flower is a modified stem. So this thalamus has node. First hole is the corolla. First hole is the sepal. Second hole is the petal, and third hole is the stamen, and fourth hole of the flower is the carpel. So these parts, the proximal part of the stamen, proximal end of the stamen is attached to the thalamus or the petal.
ये कहाँ पे अटैच्ड हुआ है, थैलामस और पेटल के साथ अटैच्ड हुआ है. सो proximal end of the thalamus remains attached with the proximal end of the stamen remains attached to the thalamus or the petals. Male function of the androecium is formation of male gamete. Formation of male gamete. This is the structure of an anther. This is the structure of an anther, and this is the filament. Actually क्या होता है? If we see the structure of an anther, if we see the structure of an anther, actually anther is bilobe. In most of the angiospermic plant, anther is bilobe. In most of the angiospermic plant, anther is bilobe and dithecous. Bilobe, dithecous, टेट्रागोनल. आंथर का शेप क्या है, टेट्रागोनल. टेट्रागोनल and tetrasporangiate. Tetrasporangiate. Dithecous, tetragonal and tetrasporangiate. एक्चुअली आंथर कैसा होता है, एक्चुअली आंथर ऐसा होता है, 2 लोब. दिस इज द 1 लोब and this is the second lobe of the anther. So the shape of the anther is tetragonal. Dithecous क्या होता है ना, each lobe has 2 theca. Each lobe has 2 theca or 2 covering. Each lobe has 2 theca or 2 covering. So this is the shape of an anther. Shape of an anther is tetragonal. This is the anther having a tetragonal shape. So this is the connective. Here is the non-fertile part of the anther. This is the connective. In each corner of the anther, there is a microsporangium. Each corner of the anther, there is a microsporangium. So each corner of the anther, there is a microsporangium. So anther is tetrasporangiate. Anther is tetrasporangiate. Anther is tetrasporangiate. Presence of 4 microsporangium. तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, tetrasporangiate. This corner or this point is known as point of dehiscence or line of dehiscence. इसे हम क्या कहते हैं, point of dehiscence. After maturation of pollen, this area will rupture and the pollen grain present inside the microsporangium released out through this area. So this area is known as point of dehiscence or line of dehiscence. These are the microsporangium. 4 microsporangium are there. This part is the connective. This part is known as connective. This is the stalk or filament. Total complete structure is known as anther. Anther is generally bilobe, dithecous, tetragonal and tetrasporangiate. Each lobe has 2 theca. And each corner of the anther has microsporangium. So presence of 4 microsporangium. इसलिए हम इसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं.
एक्चुअली अल्थर डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट ऑफ अल्थर, डेवलपमेंट ऑफ अल्थर, डेवलपमेंट ऑफ अल्थर। हमने जो अल्थर अभी देखे, डेवलपमेंट ऑफ अल्थर, एक्चुअली जब प्लांट मैच्योर हो जाएगा, फ्लावर जब मैच्योर हो जाएगा, इनसाइड द फ्लावर देयर विल बी अल्थर। और जो अल्थर का स्ट्रक्चर हम देखे वो मैच्योर प्लांट में जो अल्थर होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। एक्चुअली अल्थर का डेवलपमेंट कैसा होगा? अगर हम एक फ्लावर को देखते हैं, जो फ्लावर बॉड के कंडीशन में होता है, एक्चुअली फ्लावर कहाँ से डेवलपमेंट होगा? द फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम फ्लोरल बॉड। जब ये प्लांट और जब ये फ्लावर बॉड के कंडीशन में होता है तो हम क्या देखेंगे? सो डेवलपमेंट ऑफ आंथर कैसा होगा? एक्चुअली ये जो आंथर है एक ग्रुप ऑफ सेल से इनिशिएट होगा। आंथर इनिशिएट्स इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल्स। आंथर इनिशिएट्स इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, दिस ग्रुप ऑफ सेल्स रिमेन्स कवर्ड बाय एपिडर्मिस। Epidermis is the outer layer of the plant. Epidermis is the outer layer of the plant cell. तो क्या होता है? फ्लोरल बॉड है, फ्रॉम दिस फ्लोरल बॉड आल्थर इनिशिएट्स करेगा इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल्स एंड सच ग्रुप ऑफ सेल्स रिमेन्स कवर्ड बाय एपिडर्मिस। हम क्या करेंगे? सपोज यहाँ पे ऐसा एक ग्रुप ऑफ सेल है, many cells, group of cells, group of cells. These are the group of cells, and each cell having a nucleus, prominent nucleus, distinct nucleus. Each cell having a prominent nucleus, each cell having a distinct nucleus and cytoplasm. Each cell having a distinct nucleus and cytoplasm. Each cell having a distinct nucleus and cytoplasm. And such cells remains covered by epidermis. Such cells remains covered with epidermis. आंथर क्या करेगा? इनिशिएट करेगा इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम सच टाइप ऑफ सेल्स and these cells are known as archaeosporial cell. Such cells are known as archaeosporial. Such cells are known as archaeosporial cells, and these archaeosporial cells are diploid in nature. Diploid in nature. Such archaeosporial cells undergoes Such archaeosporial cells undergoes periclinal divisions. Such archaeosporial cells undergoes periclinal division. Periclinal division is a type of mitotic division and it produces two types of cells. And it produces two types of cells. Aanther initiates its development from a group of cells having a distinct nucleus and cytoplasm, and such cells are known as archaeosporial cells. Archaeosporial cells undergoes periclinal division and two types of cells are produced. Suppose this is the archaeosporial cell. It divides mitotically and two cells are produced. Such two cells, the outer parietal cell, the cell remains towards the outer side is the parietal cell, and the inner sporogenous cell
The cell remains towards the inner side is known as sporogenous cell. Inner sporogenous cell. All these cells are diploid. All these cells are diploid. Outer parietal cell and inner sporogenous cell. This parietal cell helps in formation of this parietal cell helps in formation of anther wall. This parietal cell helps in formation of anther wall. Parietal cell helps in formation of anther wall. Sporogenous cell may divide further. Sporogenous cell may divide further. Sporogenous cell क्या करेगा? Either further division होगा, may divide further or directly acts as pollen mother cell. Either ये further division करेगा, नहीं तो directly act as pollen mother cell. So anther initiates its development from a group of cells having a distinct nucleus and a mass of protoplasm known as archaeosporial cells. Archaeosporial cells undergoes periclinal division and it produces two types of cells, outer parietal cell and inner sporogenous cells. Parietal cells helps in formation of anther wall and sporogenous tissue may divide further or directly acts as pollen mother cell. A typical mature anther wall. A mature anther wall has four different layers. A mature anther wall has four different layers. A mature anther wall has four different layers. First layer is epidermis. Epidermis is the outermost covering. Second layer is endothecium. First layer is epidermis. Second layer is endothecium. Third layer is middle layer. Third layer is middle layer. Fourth layer is tapetum. Epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. First three layers, epidermis, endothecium and middle layer. It helps in protection. It helps in protection and dehiscence. It helps in protection and dehiscence. It will give protection to the anther and helps in dehiscence of pollen grain.